नॉर्मल क्लास की, कल की रिकॉर्डिंग नॉर्मल क्लास की। आ जाओ, कल की रिकॉर्डिंग नॉर्मल क्लास की एक चीज। हाँ मैंने कह दी करेंगे। मैं अभी से क्लासेस से बात कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। ओके बच्चा, आई विल डू दैट। हेलो सर, आई वांटेड टू से कि मतलब ऑर्गेनिक का लास्ट लेक्चर शेयर कर सकते हैं? बेटा मुझे तो पता नहीं ऑर्गेनिक का लास्ट लेक्चर हुआ कब था। नहीं सर, वो बहुत पहले आपने मैसेज किया था कि होगा, फिर लाइक हमारे ग्रुप में लिंक नहीं आया था। वो दूसरे जो नया वाला सेशन अभी चल रहा है ना, उसमें लिंक गया था, फिर आई थॉट कि होगी, मेरी मिस हो गई, मतलब मैंने चेक किया था कोई लिंक नहीं था। आई विल सेंड इट इन द ग्रुप, मेरे पास है। ग्रेट, थैंक यू। Training guys, everyone. So the paper I sent you, which we have to do now. मैंने कौन सा पेपर भेजा है? June 19, it's 21. सर हमने आज पेपर 1 नहीं करना था, आपके लास्ट क्लास में कहा था पेपर 1 करेंगे आज। नहीं, वो मैंने बेसिकली ये पेपर भेजा हुआ है, आज हम ये करेंगे, फिर जो ना हम जो कल करेंगे पेपर 1, फिर हम ये कर लेंगे जून 1921। राइट सर, जून 1921। Here we go. Okay, so I hope you all can see the screen now. मामा पेट बहुत दर्द हो रहा है। Okay, everyone. There we go. All right, guys, let's start off. It's question 1. Listen to my words, please, very carefully. Choose one of the following particles, blah, blah, blah. Each particle can be used once, more than once, or not at all. Which particle has only 20 protons in its nucleus? आपके 20 protons का मतलब है 20 is the atomic number. तो यहाँ पे 20 atomic number is actually calcium, isn't it? It's calcium 20 and 39. Brilliant. अगर आप खाली Ca भी लिख देंगे it's fine. लेकिन अगर आप जिस तरह स्पीच लिखिए, अगर आप इस तरह लिखेंगे स्पीच, तो it's actually better. Which particle has a nucleon number 35? Nucleon number 35 का मतलब है atomic mass 35 होना चाहिए. Atomic mass. क्योंकि I hope you know that atomic mass, mass number और nucleon number mean the same thing. So I think the answer is this. Cl35 and 17. Brilliant. Which particle has an electronic sector of 288? यानी कि इसका मतलब है कि इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो। चलिए जी, इसमें कितने हैं? 35 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कितने हैं? 17 इलेक्ट्रॉन्स। इसमें भी 17 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एटम है। जब एटम होता है जो एटॉमिक नंबर है वो इलेक्ट्रॉन नंबर भी होता है। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन्स, कैल्शियम में आपके 20 इलेक्ट्रॉन्स, Cl-1 17 इलेक्ट्रॉन तो ऑलरेडी है, एक -1 हो गए 18 इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर में 29 इलेक्ट्रॉन्स,
नियॉन में आपके 10 इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्साइड आयन में इट इज 10 इलेक्ट्रॉन्स, 8 ऑलरेडी है, 2 नेगेटिव मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो उसने कहा कि 18 किस में है, तो 18 इज Cl -1, 17 and 37. रिजान हो रही है. Okay, let's wait. All right, guys, everyone. So, which particle is an atom with only 10 neutrons in its nucleus?
तो मेरे हाल से आई थिंक इट्स नियॉन गाइस. हाँ, ब्रिलियंट. एटॉमिक मास minus atomic number is the number of neutrons, so it's 10, so it's neon, so it's 20 and 10. Right? Which particle is an atom of transition element? Transition. Copper. Brilliant. So copper is 29 and 64. All right. Now, the table shows some of the properties of the elements in group 2 of the periodic table. Group 2 का मतलब beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium, radium. ये group 2 के members हैं. I hope you know that these are metals. लेकिन अगर मैं इनकी reactivity compare करूँ as per group 1, तो so they are less reactive than group 1. Energy. Explain why the elements in group 2 have similar chemical properties. Guys, remember, physical property atomic mass पे depend करती है. एक एटम की फिजिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक मास पे डिपेंड करती है, और जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी है इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और द इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो देयरफॉर एक्सप्लेन व्हाई द टू एलिमेंट्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज. सो बेसिकली दे ऑल. जी बेटा क्या कह रहे हैं आप? से दोबारा एक्सप्लेन कर. या सो मैं कह रहा हूं बेसिकली, एक सेकेंड, जो एक एटम की फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है उसके एटॉमिक मास पे, और जो एटम की केमिकल प्रॉपर्टी वो डिपेंड करती है उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर. तो सिंस यहां पे दे ऑल हैव टू, लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. यस यस यस, इन इट्स वैलेंस शेल. सर मेरा क्वेश्चन था जी, सर हम एग्जाम के अंदर एब्रिविएशंस यूज कर सकते हैं? only for electron, only for PPT. यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, they both have oxidation state of 2. नहीं. Now, explain why it is easier to predict the atomic radius of radium than the melting point of radium. अच्छा, क्योंकि मेरे ख्याल से रेडियस तो is showing a trend. Sir, एक general trend है. Sir, एक general trend है. Increasing down the growth. Exactly. So मेरे ख्याल से रेडियस में तो एक increasing trend आ रहा है. जी सर. सर 1 का E part बता सकते हैं? 1 का E is it's copper basically. Transition element. तो इस सब में से the transition is only copper. Okay. So because atomic radius is showing an increasing trend, atomic radius is showing an increasing trend. इसलिए मिलाते हैं उसको रेडियस करना फिर आसान होगा as compared to its melting point, क्योंकि melting point up and down जा रहा है. Magnesium chloride contains Mg2 plus and chloride ions. Confirm बात है, ये ionic compound है ना, क्योंकि मेटल नॉन मेटल है, ऊपर उसने आयन भी कंफर्म कर दिए हैं, तो एक आयोनिक कंपाउंड है. और आपको पता है कि आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स एट RT and they have high melting point. Why? Because they have strong ionic bonds. Write the electronic configuration of magnesium ion. So guys, Mg is +2 and it's 12. तो इसके अंदर तो हुए 10 electrons. So it's 2, 8. Magnesium is produced by the electrolysis of magnesium chloride. वैसे I hope you remember guys. मैं फिर भी आपको एक बात रिपीट कर दूं तो ये आपको याद रहे. सिर्फ एक सेकेंड. ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है. एंड सो ऑन. याद रखना है फर्स्ट 5 एलिमेंट्स ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज. अगर आपने इनको बाहर निकालना इनके कंपाउंड में से, तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ती है मोल्टन कंपाउंड की. दे कैन ओनली बी एक्सट्रैक्टेड राइट यूजिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन स्टेट. अगर आपके पास सोडियम क्लोराइड है और आपने सोडियम निकालना है, तो आप पहले NaCl को मेल्ट करेंगे और फिर उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे. सो they are extracted using electrolysis of their molten compounds.
they are extracted using electrolysis of their molten compounds. इनको पहले मेल्ट करें, फिर आप उसके इलेक्ट्रोलिसिस कर लें, ठीक है। Now, वो यहाँ पे यही कह रहा है आपको, मैग्नीशियम is produced by the electrolysis of molten magnesium chloride. Construct equations for the reaction taking place at the anode and the cathode. So guys, by the way, the negative electrode क्या है? The negative electrode is the cathode, and the positive one is the anode. So negative में कौन आएगा? A cation. Mg2 plus 2 electron gives you Mg. और एनोड पे क्या आएगा? 2Cl नेगेटिव, इट गिव्स यू Cl2 plus 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, यहां मेरा एक सवाल है आपसे, फिर ज़ैनब आई टेक ए क्वेश्चन, और इसके बाद मुझे आप 5 मिनट देंगे, मैंने नमाज पढ़नी है, फिर आप भी तब तक नमाज पढ़ लीजिएगा। मुझे बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे कि इनके स्टेट सिंबल्स लिखें, तो मुझे बताएं आप स्टेट सिंबल्स क्या लिखेंगे? प्लीज गिव मी अ शाउट, एनीवन कैन गिव मी अ शाउट। बताएं जी। मैग्नीशियम आयन लिक्विड, ब्रिलियंट। और मैग्नीशियम जो Mg बन रहा है, Mg सॉलिड नहीं, लिक्विड। मुझे खुद सोच के बताया ना यार, मैग्नीशियम क्लोराइड आयोनिक कंपाउंड लिक्विड स्टेट में इतनी हीट की हुई आपने, तो अंदर से Mg सॉलिड निकलेगा भाई। Mg को तो मेल्टिंग पॉइंट लो होता है आयोनिक कंपाउंड से, अगर आयोनिक कंपाउंड ही मेल्ट हुआ है, हाउ कैन Mg सस्टेन, राइट? Cl नेगेटिव लिक्विड, क्लोरीन गैस। जी ज़ैनब, यू हैड अ क्वेश्चन। समझ नहीं लगा सर, ये दोबारा समझाएंगे Mg वाला? ओके सर, मैंने पूछना था इसका जो पार्ट बी है एटॉमिक रेडियस वाला, वो आप दोबारा समझा देंगे? एटॉमिक रेडियस वाला, ये देखो ना, ये देखो बेसिकली ये अगर आप देखें तो ये यहां से इंक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, फिर इंक्रीज कर रहा है, तो एटलीस्ट यू कैन एक्चुअली यू नो, आप यहाँ पे वैल्यू, क्योंकि एक इंक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये डिक्रीज कर रहा है, फिर वो इंक्रीज कर रहा है, वो फिर डिक्रीज कर रहा है, वो फिर डिक्रीज कर रहा है, तो आपको पता कैसे चलेगा कि अगला मैंने इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है? तो कोई ट्रेंड नहीं है मेल्टिंग पॉइंट में। सिंस एटॉमिक रेडियस देयर इज अ ट्रेंड, तो एटलीस्ट यू कैन सजेस्ट वैल्यू। ओके, यस सर, थैंक यू। एंड सर, वर वी सपोज्ड टू डू दिस पेपर बिफोर क्लास? नहीं, ये फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मैंने इस तरह कराने थे। अब जो थर्ड क्वेश्चन आप ये करेंगे, तब तक मैं नमाज पढ़ूंगा और फिर हम करेंगे, यू नो, इन दिस क्लास। अच्छा गाइस, मैग्नीशियम मैंने यहाँ पे लिक्विड क्यों लिखा? क्योंकि Mg जारी बात है सॉलिड ही होता है, लेकिन इस केस में, इस वाले कंटेनर में तो Mg सॉलिड प्रोड्यूस नहीं होगा ना, Mg लिक्विड प्रोड्यूस होगा। देखिए, आपने हीट किया हुआ है, मैग्नीशियम क्लोराइड अपनी मोल्टन स्टेट में है। मैग्नीशियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट होता है कोई 1000-1200, Mg का मेल्टिंग पॉइंट होता है कोई 100-200। तो अगर 1000 और फिर 1200 वाली चीज मेल्ट हुई हुई है, तो 100-200 वाली चीज सॉलिड कैसे आ सकती है? वो भी तो लिक्विड ही आएगी। तो Mg लिक्विड स्टेट में आएगा, सॉलिड स्टेट में नहीं आएगा। और मैग्नीशियम आयन और जो क्लोराइड आयन है, ये तो मोल्टन स्टेट है ना बेसिकली, तो आप इसको लिक्विड लिखेंगे। लेट्स कंप्लीट दिस क्वेश्चन, फिर मैं नमाज पढ़ूंगा। Magnesium reacts with aqueous copper to sulfate in a redox reaction. Which particle is reduced? Are you seeing that कि Mg 0 से +2 में जा रहा है, ये तो ऑक्सीडेशन हो गई, और Cu +2 से 0 में जा रहा है, ये हो गई रिडक्शन। तो रिड्यूस कौन कर रहा है? Cu +2 is being reduced. अगर किसी ने यहां पे लिख दिया है खाली कॉपर, तो हम नंबर काट देंगे, right? You have to write Cu +2. Why? Because Cu +2 gains electrons. Cu +2 gains electrons and forms copper. अगर किसी ने ये लिखा कि it gains 2 electrons, it's absolutely fine. सर, हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज करता है। अच्छा, वो भी लिख सकते हैं, लेकिन याद रखें जो बेस्ट आंसर इज राइटिंग इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Always remember. Yes, we can say it. You know, it gains electrons. Yes, Daniel, you're right. अच्छा, by the way, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो मैग्नीशियम भी रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, और फिर कॉपर आयन रिड्यूस कर रहा है, फिर कॉपर आयन फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ।
It's a redox reaction. By the way, इस reaction की observation क्या होगी? Cu plus 2 is a blue solution, so we can say blue solution fades. Blue solution fades. लिख लें please. और जो copper है वो अगर pink solid तो we can say pink solid forms. सर इस केस में थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन ये होती है कि हमें कैसे पता होता है कि हमें जीरो कौन सा एलिमेंट जीरो के साथ लगाना है, स्पेशली जब सर लाइक दो से ज्यादा रिएक्शंस होते हैं. एक बात हमेशा याद रखें, जो एलिमेंट अनकंबाइंड स्टेट में अपनी एटॉमिक स्टेट में है या अपनी मोलेकुलर स्टेट में है, यानी कि फिजिकल स्टेट एट आरटीपी के अंदर है, एलिमेंटल स्टेट जो है उसमें चार्ज जीरो ही होगा ना. चार्ज कब आता है? व्हेन इट फॉर्म्स अ कंपाउंड. मैग्नीशियम तो जीरो ही होगा, लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड में Mg पे चार्ज आ जाएगा ना. Mg अकेला तो जीरो ही होगा. फिर कॉपर अकेला जीरो होगा. Cl2 आई मीन क्लोरीन गैस अकेली जीरो ही होगी. So elements in their standard states have no charge, zero. When they react with another element and form a compound, only then the charge rises. Right, sir. Excuse me, sir. जी. सर ये सी का सेकंड पार्ट दोबारा एक्सप्लेन कर दो. वो कहते हैं मैग्नीशियम इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड. देखो मोल्टन मैग्नीशियम क्लोराइड में कौन कौन से आयन्स होंगे? Mg2+ होगा और क्लोराइड आयन होगा. कंस्ट्रक्ट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस एट द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन. मुझे बताएं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट करेगा? Mg2+ अट्रैक्ट करेगा. तो Mg2+ अट्रैक्ट करेगा, वो डिस्चार्ज करेगा. तो डिस्चार्ज करने के लिए उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो Mg बन जाएगा. क्योंकि आपको पता है कि नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है. नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे हमेशा रिडक्शन होती है, इलेक्ट्रॉन गेन होता है इसके ऊपर. क्योंकि जो कैटायन है इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और डिस्चार्ज कर जाएगा, उसका चार्ज खत्म हो जाएगा. क्लोराइड आयन विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बिकॉज़ पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स. क्लोराइड आयन विल टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म क्लोरीन गैस. क्योंकि याद रखें ऑन द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन हैपेंस ओनली, इसलिए इलेक्ट्रोलिसिस भी रिडॉक्स की एग्जांपल होती है. मुझे ये नहीं समझ आती, एक की इक्वेशन फर्क लिखते हैं और ऑक्सीडेशन की इक्वेशन फर्क लिखते हैं. क्या मतलब? समझ नहीं आया मुझे. उसके रिएक्टेंट एरो से पहले लिखे हैं, उसके वो बाद में लिखे हैं. अच्छा, आप बात कर रहे हो +2 इलेक्ट्रॉन्स की, 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हो. मैंने यहाँ लिखे. Yes. Okay, so basically a convention is taken, electrons are written in the positive terms only. वरना अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिख ले 2 negative -2 इलेक्ट्रॉन gives you Cl2, बात तो ये भी ठीक है, लेकिन एज अ कन्वेंशन हम इलेक्ट्रॉन उठा के प्रोटॉन लिख देते हैं. फिर we write in the positive terms rather, just to maintain the convention. Yes, Munta, we can write, but writing answer in terms of electrons is always better. आगे चलते हैं. So do we always write the state symbols? No, ये तो मैंने आपसे पूछे स्टेट सिंबल्स, उसने नहीं पूछे. वो पूछेगा फिर आप लिखेंगे स्टेट सिंबल्स. सर ये ब्लू सॉल्यूशन फेड किस चीज का है? ये इस रिएक्शन की मैंने आपसे ऑब्जर्वेशन पूछी है, इस रिएक्शन की. इधर मैग्नीशियम की है या फिर बाद में Cu+2 जो ब्लू कलर का होता है ना, तो ब्लू रिएक्ट करे तो फेड हो जाएगी ना. और फिर कॉपर सॉलिड इज पिंक, तो पिंक सॉलिड बन रहा है. सर जी. ओके सर. आई हैड अ क्वेश्चन कि यहाँ पे अगर हम मैग्नीशियम की ऑब्जर्वेशन लिखना चाहें, सो कैन वी राइट कि ग्रे डिसअपीयर्स, डिसॉल्व्स? ग्रे सॉलिड डिसअपीयर्स, यस, यू कैन से दैट एज वेल. जी. आपको आना चाहिए कॉपर आयंस के और आयरन आयंस के. Fe+2 is green, Fe+3 is red brown, or Cu+2 is blue. No problem. Magnesium reacts with steam. Name the products of this reaction. Guys, are you remember? जब magnesium steam से react करता है, so it forms magnesium oxide and hydrogen gas. लेकिन आई होप रिमेंबर कि जब मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट करेगा, जो कि बड़ा स्लो रिएक्शन होता है, इट फॉर्म्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस. क्योंकि यहाँ पे स्टीम है, तो इट्स मैग्नीशियम ऑक्साइड
अगर इक्वेशन लिखी हुई है स्टेट सिंबल्स के बगैर तो हमें कैसे पता चला कि ऑक्साइड बन रहा है या हाइड्रोक्साइड बन रहा नहीं, ऐसे कभी नहीं होगा। H2O के साथ उसने हमेशा लिखा होगा, बताया होगा, उसने आपको यहाँ बताया है। तो अगर वो इक्वेशन देगा तो बताएगा आपको कि वो जो किसकी बात कर रहा है। फिर वो कहता है कि कैल्शियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, राइट इक्वेशन। तो कैल्शियम जब रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर से, देखो उसने बताया ना कोल्ड वाटर, it gives you calcium hydroxide plus hydrogen gas and the equation is balanced. Magnesium chloride is a soluble salt. Describe how a pure sample of magnesium chloride crystals can be obtained from magnesium. देखिए यार, अगर आपने मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है और वो कह रहा है कि मैग्नीशियम क्लोराइड उसने बता दिया कि मैग्नीशियम से बनाना है, तो Cl कहां से आएगा? तो आप उसको HCl से रिएक्ट कराएंगे। और ये एक सॉल्युबल सॉल्ट। आपको पता है कि जब भी सॉल्युबल सॉल्ट बनानी होती है तो सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के लिए द ओनली एक्वस थिंग लेफ्ट शुड बी द सॉल्ट इटसेल्फ। ये खत्म हो जाना चाहिए और ये पड़ा होना चाहिए, फिर आप इसको फिल्टर ऑफ कर लेंगे। तो इसलिए हम एक्सेस मैग्नीशियम डालते हैं एथिल के एथिल खत्म हो जाए, ठीक है, ताकि क्योंकि एक्सेस मैग्नीशियम जो है उसको फिल्टर ऑफ कर लेते हैं, ठीक है, और जो मैग्नीशियम क्लोराइड है उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो देयरफॉर वी से दैट कि एक्सेस मैग्नीशियम इज एडेड टू HCl, ठीक है। तो आप एक्सेस Mg ऐड करेंगे एथिल लगे एथिल खत्म हो जाए, राइट, फिल्टर ऑफ द एक्सेस मैग्नीशियम। तो एक्सेस Mg को फिल्टर ऑफ कर लें, ओके। और फिर एक सेकेंड और फिर हीट द फिल्ट्रेट to remove water, remove excess water until saturation point is achieved, right? और फिर we can say cool the solution at moderate rate and obtain crystals. Crystals are washed, cold water and dried in folds of filtering. तो आपने एक्सेस Mg डालने HCl में ताकि HCl खत्म हो जाए, बाद में खाली सॉल्ट ही पड़ी हो। फिर एक्सेस Mg का फिल्टर ऑफ कर लेंगे और मैग्नीशियम क्लोराइड का क्रिस्टलाइज कर लेंगे। एज सिंपल एज दैट। फिर ये हम सॉल्युबल सॉल्ट में टाइट्रेशन नहीं करते? नहीं करते तो नहीं, सॉल्युबल सॉल्ट बनाने के भी तरीके हैं ना। बिल्कुल कोल्ड डिस्टिल्ड वाटर लिखना, कोल्ड डिस्टिल्ड वाटर, कोल्ड जो डिस्टिल्ड वाटर से आप वॉश कर दें, ठीक है, और बाद में आप क्रिस्टल्स ऑब्टेन करें और उस बाहर निकाल लें। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें इक्वेशन लिखनी पड़ती है स्टार्ट में? नहीं, नॉट रियली, वो तो मैंने आपके लिए लिखी है। सर जी बेटा बस 1 मिनट, मुझे 1 मिनट।
Heat the filter to सर remove the एमसीक्यू carbon. की Remove. बजाय सर एमसीक्यू की How? बजाय एमजीओ यूज कर सकते हैं? Sorry, क्या हो सकता है? सर एमजी के बजाय एमजीओ यूज कर सकते हैं? नहीं बेटा, उसने कहा है आपने mg यूज करना है, बट वी कैन यूज mgo एज वेल, लेकिन उसने आपको रिस्ट्रिक्ट किया mg के ऊपर, बट वी कैन यूज mgo एज वेल बाय द वे. अब आप लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, क्वेश्चन 3 स्टार्ट करते हैं प्लीज, और 4 भी स्टार्ट करते हैं. इट्स क्वेश्चन 3 एंड 4 व्हिच यू हैव टू डू, बल्कि 5 भी कर लें, छोटे छोटे सवाल हैं. इट्स क्वेश्चन 3, 4 एंड 5. मैं नमाज पढ़ लूं. 3, 4, 5. Meanwhile 3, 4, 5 कर लीजिएगा, क्योंकि नमाज के बाद I'll be discussing 3, 4, 5 with you. अपने पेपर पे निकाल लें 3, 4, 5. Yes, Daniel.
क्लास आफ्टर द क्लास अभी रख दो बेशक आफ्टर द क्लास ऐसी या कल आ जाना फिर मेरी क्लास कंसेक्यूटिव चलनी है 4 o'clock तक ठीक ओके गाइस एवरीवन I'm back. Nafis. Now, so molybdenum, or you can see MO is a transition element. Suggest one physical property of molybdenum that is, typical of a transition element. High melting point. High density. Sorry, क्या कहेंगे? Colored compounds. अच्छा मैंने कल भी बताया था बेसिकली जो है ना अब colored compounds जिस तरह ओ लेवल में हम उसको डील करते हैं विद मोर लाइक अ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी लेकिन ए लेवल में इट बिकम्स मोर लाइक अ फिजिकल प्रॉपर्टी तो आप कोशिश करें कि इसको फिजिकल में मत लिखें इसको केमिकल में ही लिखें बोथ ओ लेवल एंड आईजीसीएसई हाँ जब आप ए लेवल में आएंगे फिर चेंज हो जाएगी ये बात सजेस्ट वन केमिकल प्रॉपर्टी of molybdenum compounds that is typical of compounds of transition elements. Variable oxidation. Brilliant. Variable oxidation states. Or you can say or you can say colored compounds as well. Molybdenum steel is an extremely hard alloy. Suggest using ideas about metallic structure why molybdenum steel is much harder than pure iron. A label diagram may help you answer this question. So by the way, मुझे बताएं कि it is molybdenum steel का मतलब है ये alloy है और alloy का मतलब है कि आपके different sized atoms होंगे इसके अंदर, right? यानी कि it's like this. यानी कि अगर मैं इसके बनाऊं तो I think मैं ऐसे बनाऊंगा. Right? So different sized atoms हैं. तो layers slide नहीं कर सकती. Right? So we can say atoms have different sizes in molybdenum steel. सर इसमें हमें लाइक उसकी जरूरत नहीं ना इलेक्ट्रॉन्स की नहीं therefore the layers cannot slide over each other. And let's go 2 marks, guys. Yes, Hamza, you're right. No, Malaika, सिर्फ हम बनाएंगे ये इसकी alloy की diagram. I mean, not the metallic diagram. Just the alloy diagram where we have actually different sizes of atoms, so bonded together. Molybdenum steel is made by reducing a mixture of molybdenum oxide and iron oxide with aluminium. As you can see, molybdenum steel contains, about 20% biomass of molybdenum. Acha. So calculate mass of molybdenum oxide needed to make 1000 grams of molybdenum steel. Give the answer to 3 significant figures. हाँ जी guys. Sir, I got 1500 grams. चलिए मैं भी कर दूं कैलकुलेटर से निकाल 7500 ग्राम. देखिए जी वो कह रहे हैं कि 1000 ग्राम्स ऑफ मोलिब्डेनम स्टील में खाली आपका 20% मोलिब्डेनम होता है. तो पहले देखें ना कि मोलिब्डेनम कितना है इसके अंदर. तो आपका 20% ऑफ स्टील 20% ऑफ दिस स्टील आई थिंक इट्स 200 ग्राम्स. यानी कि 200 ग्राम्स मोलिब्डेनम बनाने के लिए कितना मोलिब्डेनम ऑक्साइड रिक्वायर होगा. अगर आपको इसके 200 ग्राम बनाने हैं तो वो कह रहा है इसका कितना ग्राम रिक्वायर होगा. तो आप अब इसका मोल्स निकाल लें. मोल्स ऑफ मोलिब्डेनम तो इट्स 200 डिवाइड बाय 96. तो इट्स 200 डिवाइड बाय 96 2.083. ये मोल्स आ गए. अब मोलिब्डेनम ऑक्साइड और मोलिब्डेनम 1:1 में है. तो मोल्स ऑफ मोलिब्डेनम ऑक्साइड कितने होंगे 2.083. तो कितना मैस होगा इसका
तो 2.083 into 96 plus 48 इसका molecular mass, तो into 96 plus 48 300. So guys, it's 300 grams. तो आपको मोलिब्डेनम स्टील का 1000 ग्राम दिया हुआ है, उसने क्या है इसमें आपका 20% मोलिब्डेनम होता है। पहले देखिए मोलिब्डेनम कितना होता है, क्योंकि इक्वेशन में आपको मोलिब्डेनम दिया हुआ है। तो फिर मोलिब्डेनम से आप मोलिब्डेनम ऑक्साइड के मोल्स निकाल लें, एमआर से मल्टीप्लाई करें तो मैथ आ जाएगा उसका आपके पास। ये सेकंड इक्वेशन तो यूजलेस है ना? हाँ यूजलेस है। तो सर ये दी क्यों हुई है ऐसी इंफॉर्मेशन? फिर ही आपने 96 plus 48 क्यों लिखा है? मैंने उसका मोलेकुलर मास लिया है, मोलिब्डेनम ऑक्साइड का मोलेकुलर मास MoO3 का 96 plus 16 into 3। Thank you, sir. No problem. Shall I move on, guys? Everyone. So basically, आपको 1000 ग्राम दिया हुआ है मोलिब्डेनम स्टील का, और उसने क्या है इसमें आपका 20% मोलिब्डेनम होता है। तो आप पहले मोलिब्डेनम निकालें कितना है, वो आपने निकाल लिया 200 ग्राम मोलिब्डेनम है। तो 200 ग्राम अगर मोलिब्डेनम हो तो कितना मोलिब्डेनम ऑक्साइड रिक्वायर होगा, तो आपने मोल्स निकाल लिए मोलिब्डेनम के, 1:1 में है मोलिब्डेनम ऑक्साइड, उसके मोल्स आगे उसको उसके एमआर से मल्टीप्लाई करें तो मैथ आ जाएगा। Now, air is the source of many gases. What is the percentage of volume? उसके एमआर से क्यों मल्टीप्लाई किया है? क्योंकि मास से निकालना, आपने मास निकालना, मास को मोल्स इनटू एमआर। तो मतलब 200 ग्राम ऑफ मोलिब्डेनम से 300 बनेगा उसका ऑक्साइड का जो भी है। नहीं, हम इसना कहेंगे 300 ग्राम मोलिब्डेनम ऑक्साइड से इसके 200 ग्राम बनेंगे। Okay, so thank you. So guys, what is the percentage of nitrogen? 78%? 78. ये तो वैसे याद रखना। Brilliant. Outline the separation of oxygen, nitrogen, noble gas from liquid air. तो I think it's very simple. आप liquid air की fractional distillation करते हैं, ठीक है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे करते हैं, आप उसको हीट करते हैं, फिर इन एलिमेंट के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स हैं, सो द वन द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट विल मूव आउट फर्स्ट, इजंट इट? सो बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन is done on liquid air to remove the fractions, right? The liquid air is heated ठीक है, और आपको पता है कि each element has different boiling point. Yes, we can vaporize as well. Okay. Talking about fractional distillation. Depends on difference in boiling point. The fraction with low boiling point is distilled off first. At the top of the column. So fractional distillation is done on liquid air to remove the fraction.
The liquid air is heated and vaporized. फिर fraction distillation depends on difference in boiling points. So the one with the low boiling point is distilled off first. As simple as that. State one large scale use of nitrogen. बहुत simple. It is used to make exactly. It is used to make ammonia. सर अगर हम हेबर्स प्रोसेस लिखें वो भी सही है? वो भी ठीक है. It is used in Haber's process. It's fine as well. जी अयान, आपने उसकी लिक्विफैक्शन का डिटेल ही लिखनी कि पहले कंप्रेस करेंगे और एक्सपैंड करेंगे. ठीक है, आपने सिर्फ फ्रैक्शनल सिस्टम बताना है. It is used to make ammonia, or used in Haber's process, or used to make fertilizers. All are correct. पैकेजिंग हो सकता है इसके लिए? नहीं. No. Nope. Now it says air contains gas pollutants. Name one gas that contributes to acid rain. Wow. Sulfur dioxide. बिल्कुल. Sulfur dioxide लिख दें, nitrogen dioxide लिख दें. State one environmental consequence of an increase in the percentage of carbon dioxide in the air. Global warming. Brilliant. क्योंकि CO2 is a greenhouse gas. याद रखिएगा, CO2 and methane are very famous greenhouse gases. भूलना नहीं है. Describe the source of carbon monoxide in air. याद रखें, CO जब भी बनती है incomplete combustion. Brilliant. So incomplete, combustion of hydrocarbon from the combustion engine, right? So incomplete combustion of hydrocarbons from the car exhaust. Excuse me, sir. जी बच्चा. नहीं, गलत है फिर. ये कार एग्जॉस्ट क्यों निकली? ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं? सॉरी, ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं? यही दो होती हैं सिर्फ. CO2 and methane are very famous greenhouse gases. वैसे by the way, steam, I mean clouds भी होते हैं greenhouse gas. यानी कि steam is also greenhouse gas. जी बच्चा. सर अगर हम लिखें incomplete combustion in vehicles तो वो सही होगा? Incomplete combustion of fuel in vehicles या हाइड्रोकार्बन इन व्हीकल्स. तो इनकम्प्लीट कम्बशन किस चीज की? तो इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल लिख दें, हाइड्रोकार्बन लिख दें, फ्यूल लिख दें, इट्स फाइन. नाउ acid U is a compound containing carbon, hydrogen and oxygen. A 6.3 gram sample of U contains 1.6 gram of carbon, 0.14 gram of hydrogen. Calculate the formula. Okay, carbon ratio hydrogen, so 1.68 and 0.14 divided by 12 divided by 1. So फिर 1.68 divided by 12, 0.14 और ये 0.14, तो 0.14 over 0.14, तो ये हो गया 1:1. तो empirical formula is ऑक्सीजन भी डाल दें. ऑक्सीजन था सर, यू में से माइनस करेंगे उसको. सर ऑक्सीजन 2 आ रहा है. सर ऑक्सीजन 2 सारे ऑक्सीजन माइनस 0.1. सर वो 4.48 आ रहा है. 4.48 by 16 0.28 284 0.14, तो रेशियो 2, तो ये CH42. A 0.086 gram of sample U is completely neutralized by 12.7 cm³ of 0.15 molar KOH. 1 mole of U react 2 moles of KOH. Calculate the formula mass of U. पहले मुझे बताएं कि U react कर रहा है KOH से. कितने मोल्स हैं KOH के? तो आप निकाल सकते हैं 0.15 into 12.7 divided by 1000. So it is 12.7 divided by 1000 into 0.15.
1.905 10⁻³ moles. वो कहता है कि 1 मोल ऑफ यू रिएक्ट विद 2 मोल ऑफ KOH. तो अगर 1 मोल यू आपको 2 मोल KOH से रिएक्ट कर रहा है, तो अगर KOH के 1.905 10⁻³ है, तो फिर U कितना होगा? X. X इक्वल्स टू, इसको डिवाइड बाय 2 कर दे, ये आ गया 9.525 10⁻⁴ मोल्स. ये मोल्स आ गए U के. उसने आपको इसका मास दिया हुआ है U का. ये U का मास है, ये U के मोल्स हैं. निकालना क्या है उसका? मोलेकुलर मास. मोलेकुलर मास इक्वल्स टू मास ओवर मोल्स. सॉरी, मोल्स इक्वल मास फॉर MR. MR इक्वल्स टू मास ओवर मोल्स. कितना मास है? 0.086. और कितना ये है? 9.525 10⁻⁴. 0.086 divided by answer 90, so it's 90.3. 90.3 is the molecular mass. फिर वो कहते हैं what is the molecular formula of U? तो सिंपल सी बात है वैसे. Molecular mass equals to N into empirical formula mass. 12 plus 1 plus 32. तो N कितना आ जाएगा? 13 plus 32. 90 divided by this 2. N आ गया 2. तो ये empirical formula है. N2 है तो ये रहेगा C2H4O4. Oh, sorry, C2H2O4. Sorry, it's called C2H2O4. Is that everyone? Excuse me, sir. जी बच्चा. Part B में मेरा आंसर 90.5 आ रहा है. Is that correct? ठीक है, that's fine. It doesn't matter. और क्लियर गाइस, अब इस तरह कीजिएगा कि ये अगले सारे क्वेश्चंस कर लीजिएगा. हम कल पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर we will move further. Right? And my next class has started. ये क्वेश्चन जरूर कंप्लीट कर लीजिएगा प्लीज.